So this is what we were discussing last time, hierarchical clustering algorithm. So we discussed कि algorithm जो है वो किस तरह से जो है ये learn करता है. And at the end we said कि there's this figure called a dendrogram that you get as an output, और इसकी base पर you can select कि आपको कितने clusters जो हैं वो eventually choose करने हैं. So remember the y-axis here represents the distance. So जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाएंगे, that means कि clusters के दरम्यान में the distance is एक cluster के अंदर जो different observations हैं उनके दरम्यान में distance बढ़ता जा रहा है, right? So there are two things here. So you do not want कि एक cluster के अंदर जो observations हैं उनमें बहुत ज़्यादा distance हो. That's one goal, and the other goal is you want as few clusters as possible with maximum possible targeted information, right? So आप ये भी देखेंगे कि आपको limited number of clusters चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना है साथ कि distance वाले जो axis पे आप बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो. So for example, if you were to choose 2 clusters using this horizontal line here, उसमें you see कि उनका distance जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से हो रहा है between observations. So the sixth observation, its distance with the first and second observation is relatively large. So you have to decide कि अच्छा whether it's whether you can compromise in this or not, या फिर maybe you want to increase the number of clusters ताकि हर cluster के अंदर जो observations हो वो एक दूसरे से काफी similar हो. So for example, one possibility here could be कि आप ये पर्पल क्लस्टर पूरा that's 1 2 and 6 और ये जो ब्राउन क्लस्टर पूरा that's 3 4 and 5 ये दोनों चूज कर लें. So maybe you choose to use two clusters, or the other possibility is कि you choose to use 4 clusters, कि आपका एक 3 और 4 वाला एक क्लस्टर हो जाए, एक ये 5 क्लस्टर हो जाए, एक ये 1 and 2 वाला क्लस्टर हो जाए रेड वन, और ये आपका एक 6 क्लस्टर हो जाए. You may want to choose 4 clusters. उसमें आपका फायदा ये होगा कि within clusters जो आपके distances होंगे they will not be very large. So this is a decision that you have to make at the end using different factors. हम factors भी discuss करेंगे when we are done discussing the other algorithm as well, right? So end पे आपको ये output मिलती है जिसकी basis पर आपको अपने number of clusters जो है वो decide करने होते हैं. All right. Now, some advantages of using this algorithm, hierarchical clustering. It's purely data driven. You do not have to choose any parameters beforehand. So for example, आपको कुछ नहीं बताना होता कि आपको number of clusters कितने चाहिए. You don't have to assign anything beforehand. You just let the data do its work. जो आपको output मिलती है उसके ऊपर फिर आप decide कर सकते हैं कि अच्छा आपने distance पे कहाँ cut off लगाना है या आपने number of clusters पे कहाँ पे cut off लगाना है, right? The dendrogram is fairly easy to interpret. And it shows you the exact clustering process. So for example, it shows you सबसे पहले ये 1 or 2 cluster हुए, उसके बाद 3 or 4 cluster हुए, उसके बाद you went to this path, next ये cluster हुए 3 4 and 5, and the next step 1 2 and 6 ये यहाँ पे cluster हो गए, and in the final step everything was clustered in one single group. So it shows you the exact process के step by step क्या follow हुआ था, right? But then there are some disadvantages as well. This hierarchical clustering, it just makes one myopic pass through the data. So it's very similar to what used to happen जब आप trees build करते थे. आप सिर्फ ये देखते थे कि अच्छा next step क्या होना चाहिए. So it's very similar to that. आप सिर्फ ये देखते थे कि अच्छा next shortest distance कौन से. वहाँ पे आप देखते थे कि अच्छा next आपको जो है highest information gain कहाँ पे मिल रहा है. In this case, you're looking at कि next आपको जो है lowest distance कहाँ पे मिल रहा है, आप उनको cluster कर दें. Now, there's a problem with this, and that is, let's consider this example. So you've got some retail customers, right? So you've got a whole bunch of customers shown in this depiction here. So now they have different characteristics, right? आपने इनको cluster करना है using the different features you have available for these customers, right? Now, let's say आप इसमें hierarchical clustering apply करते हैं और आप उसकी basis पर जो है वो देखते हैं कि आपके results क्या आते हैं. Now,
what happens is आपको actually ये पता है कि इस data के अंदर जो best two clustering है ना, as in जो best आप cluster कर सकते हैं in two groups, that's going to be by gender. So let's say males and females generally have different buying patterns with respect to the products that you are selling, right? Usme, maybe females have a different order size. They have the different category of products that they choose, which is different, which is different from what men choose to do, right? So the best two clustering in this case may be by gender. And you also know कि अगर आप two groups के बजाय अगर आप three groups बनाना चाहते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा optimal three clusters क्या हो सकते हैं? It may turn out कि optimal three clusters जो हैं आपके they are based on ethnicity. So maybe you've got blacks, Hispanics, and whites, and that would give you the best three clusters, right? So this could be by race or ethnicity. Now, if you were to use hierarchical clustering in such data, जहाँ पे आपकी जो best two clustering है that was based on gender, and the best three clustering that this is based on ethnicity, आपको जब आप hierarchical clustering use कर रहे होंगे, hierarchical clustering is not going to give you this result कि आपकी best three clustering जो है वो by ethnicity and by best two clustering जो है by gender है. The reason for that is, look at this dendrogram here. So ये क्या करता है? It considers all of the observations as separate clusters initially, right? And then it starts combining these together. So अगर आप एक point पे पहुंच गए हैं जहां पे आपके पास three clusters हैं already available, and they may be, let's say, by ethnicity. So let's say आप इस point पे पहुंच गए हैं जहां पे you have three clusters and they are by ethnicity, right? अब अपने three clusters से next आपका step होगा कि आप इनमें से कोई दो clusters को combine कर दें, and that's going to give you the best two clusters, right? According to hierarchical clustering. अब इसमें आप देखेंगे कि इन तीनों clusters में से कौन से दो जो हैं उनका distance एक दूसरे से जो है वो सबसे कम है. So let's say it turns out कि whites और Hispanics जो हैं इनका जो distance आता है that's the lowest, right? Within these three clusters. और आप इन दोनों clusters को जो है वो combine कर देते हैं, right? ये जो second और third cluster है इन दोनों को combine कर देते हैं. जब आप इनको combine करते हैं, you see you do not really get this one. You don't get this clustering by gender, because ये देखें अगर आप इन दोनों को combine करते हैं, this group has both males and females, and the other group, the group of blacks, it already has both males and females as well. So आपकी जो इस case के अंदर आप three clusters से two clusters पे move करते हैं, it does not give you the clustering by gender, which should have been the best two clustering, and you're not getting that from hierarchical clustering. You would either get the one by gender, or you would get the one by ethnicity. आपको दोनों जो हैं एक run पे hierarchical clustering में दोनों एक time पर नहीं मिल सकते, right? So that's a disadvantage of this algorithm, hierarchical clustering. It's very similar to the pre-pruning issue that we had in classification trees. It's very similar to that. Okay, let me look at a question. For some reason I cannot see my chat, so if anybody had a question there, please unmute yourself and just say it. For some reason I can't open chat for Abhi. So you can just stop me and ask right now if you have a question. Otherwise I'll move on. Okay, so the other algorithm that we need to discuss is k-means clustering. So let's see how this one works. It has some similarity with k nearest neighbors,
in terms of कि आप जो है एक point का जो है distance देख रहे होते हैं from a lot of other points, but that's all that's similar, but it's very easy to understand as well. K means clustering. Clustering में आपको सबसे पहला जो step होता है ना, you have to decide beforehand कि आपको number of clusters जो हैं वो कितने चाहिए, ठीक है? Hierarchical clustering में that could be a decision जो आप end पर ले सकते थे after running the algorithm. K means clustering के अंदर you have to decide it beforehand. So you need to have some idea about your data, और आपको जो है पता होना चाहिए कि आपने इसको कितने clusters में जो है वो divide करना है, right? Of course, you can test a couple of different numbers. So for example, let's say आपका ख्याल है कि according to your data size, according to your customer base, अगर आप customer segmentation कर रहे हैं, you may think कि आप जो है 5 से 10 के दरमियान में आपके जो है ना number of clusters होने चाहिए. So you may want to try a few things and run this algorithm again using different values of k, so that's entirely possible. लेकिन आपको जो भी value of k है, आपको initially जो है वो input करना होता है इस algorithm के अंदर for one particular run. So अगर आपको 6 clusters बनाने हैं तो उसके लिए you'd run this algorithm once. अगर आपको 7 clusters बनाने हैं, you could run this again, and then you can see कि उसमें से आपको किसके सबसे बेहतर जो है results मिलते हैं, right? So that's the first thing. You have to give an input to this algorithm, that is the number of clusters that you want to be determined. Now, once you have given that input, this is how the algorithm is going to work. So सबसे पहले आप हर point को एक cluster में randomly assign कर देंगे, right? So there's no calculation needed here. You just assign each point. So let's say you've got 10,000 different observations, and you want those 10,000 observations to be categorized into to be classified into these 5 clusters. Let's say आपने k की value यहाँ पे 5 choose कर ली. अब उन 10,000 values को आप randomly for every observation आप क्या करेंगे, उसको एक cluster assign कर देंगे इन पांचों में से कोई भी. Now it's completely random, right? There's no calculation needed there. And then there's going to be a recursive loop here. आप एक iteration जो है वो run कर रहे होंगे. And how does that work? आप जो भी आपने clusters assign किए हैं, आप हर cluster का for example आपने यहाँ पे 5 clusters randomly assign कर दिए different observations को. अब हर cluster के अंदर you've got a certain number of observations. So let's say बस first cluster के अंदर 3,000 observations है out of those 10,000, right? Now what you would do is for those 3,000 observations आप उनका centroid determine करेंगे, right? Centroid is कि आप उन सब की average determine करेंगे, 3,000 की आप average value determine करेंगे. And then आप क्या करेंगे, आप यही process repeat करेंगे for each of those clusters. So वो जो 5 clusters थे, based on the observations जो आपने assign की थी initially वहाँ पे, आप उन observations को use करके हर cluster का एक centroid determine करेंगे. Once you have determined that centroid, you're going to rerun this assignment process कि आप हर point को दोबारा से अब assign करेंगे, हर point को दोबारा से assign करेंगे to whatever cluster is, to whatever centroid is closest to that point, ठीक है? और फिर आप दोबारा से ये process repeat करते जाएंगे. It's best understood visually, so let me show you the visual now. So let's say you've got an example like this, ठीक है? You've got random points like this, random observations like this. आपको इसके जो है 3 clusters, in points को आपने 3 clusters में divide करना है, right? So the first step is going to be आपने अगर choose कर लिया, आपने 3 clusters में divide करना है, आप इन points को randomly किसी भी 3 cluster randomly उनमें से 3 clusters में से कोई भी assign कर देंगे, right? So this is the first step. So let's say you've got one cluster that's represented by color green, you've got another cluster represented by color pink, and you've got another cluster that's sorry, it's not pink, it's purple. So you've got green cluster, you've got purple cluster, you've got an orange cluster.
or a brown cluster, whatever it is. So I'm saying it's green, brown, and purple, right? So let's say you've got these three clusters. I'm very bad with color, so let's say it's green, purple, and brown. So let's assume that that's what it is. Now आपने randomly इनको assign कर दिया, right? Now जब आपने randomly इनको assign कर दिया, you see there's no pattern as such, because of course आपने randomly assign किया, आपको कोई भी grouping इस तरह से as such नजर नहीं आ रही. So the next step is going to be for each of these different clusters observations, आप इनका centroid determine करेंगे. For example, आप जो green observations है यहाँ पे, green points है, इनकी average देखेंगे, purple points की average देखेंगे, और brown points की average देखेंगे. These bigger circles here in the center, these show कि इनकी averages क्या आ रही हैं, right? So आपने randomly assign किए थे, you would expect कि सारे clusters की averages जो हैं, it's going to be somewhere in the middle there. ठीक है? So इसलिए एक दूसरे के इतना करीब है, because सारे random assignments थी, the average is going to be fairly similar. लेकिन इसमें of course थोड़ा बहुत difference आ रहा है because of some random variation. So pink cluster, the purple cluster is here towards the bottom left. The brown cluster is here towards the top left, and you have the green cluster here towards the right. इनकी centroids जो हैं ये यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? Now the next step is going to be आप हर point को assign कर देंगे based on the centroid that is closest to that. So for example, ये जो green point यहाँ पे नजर आ रहा है left side पे, it's actually closest to this brown centroid, तो मैं इस green को भी brown cluster में assign कर दूँ, right? So that's going to be the next step. So in the next step, what you do is जो भी values जिस centroid के करीब हैं, आप उनको वो assign कर देते हैं, right? So अब देखें इसमें आपको कोई grouping नजर आना शुरू होगी, right? So आपको green यहाँ पे right side पे सारे green आ गए हैं, bottom left पे you've got all purple, at the top here you've got all brown because वो सारे इस brown centroid के करीब थे. So you repeat the process. अब आप क्या करेंगे? अब आप दोबारा से इन clusters के इन observations के हर cluster के अंदर centroids determine करेंगे, right? So you repeat the process. अब आपने दोबारा से centroids इनके calculate किए, अब इनके centroids यहाँ पे अलग-अलग show हो गए हैं, right? So now you see some clarity in terms of the clusters that you have there. But then again, once you have these new centroids, आप वही process दोबारा repeat करेंगे. So for example, यहाँ पे some of these purple points here, they are closer to this green centroid, तो ये भी आप green के अंदर move कर जाएंगे, right? And some of these brown are also closer to this green one, and this point, for example, is closer to the purple one. So आप दोबारा से assignment करेंगे based on the new centroids. आपने दोबारा से assignment की, so now some of those points have changed again. ठीक है? Again, using these new points, you again calculate the centroids, and you keep repeating this process until you have some final result after a number of iterations जहाँ पे आपके ये clusters और इनके centroids did no longer change. ठीक है? So that is the point when you would actually stop clustering further. So in this case, this is the point जिसके बाद अब आप दोबारा भी इसको assignment करते हैं, दोबारा से centroid calculate करते हैं, these clusters are not changing anymore. So this is the point that you would stop. ठीक है? So this is the final clustering that you have. Yes, Azhar? सर ये पहली दफा centroids की position कैसे change हुई थी? पहली दफा ये वाली? सर इसके बाद कैसे change हुआ? अब आपने अच्छा, so this was the first time आपने centroids इसका जो है find कर ली random assignment के बाद. उसके बाद आपने क्या किया? Closest जो भी point जिस centroid के closest है आपने वो assign कर दिया. जब आपने ये assignment कर दी इसमें, according to which centroid these points are closest to, तो आपकी जो new colors आ रहे हैं यहाँ पे, for example, this is the green cluster, इसमें observation है सारी. अब आप इसकी base पर centroid calculate करेंगे. अब सारी green observations यहाँ पर हैं, तो जाहिर है इसका centroid भी जो है कुछ यहाँ पर आएगा.
राइट, पर्पल पॉइंट्स आपके सारे इस रेंज में आ रहे हैं, तो इसकी एवरेज जो है इनके दरमियान में कहीं मिडिल में आएगी। इसी तरह ब्राउन पॉइंट सारे इधर आ रहे हैं, तो इनकी एवरेज भी इट्स गोइंग टू बी समवेयर इन द मिडल ऑफ दीस पॉइंट्स। डज दैट मेक सेंस अजहर? यस सर, लेकिन हम उसको फिर से सेंट्रोइड चेंज करने के बाद दोबारा टेस्ट रन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही जैसे कहते हैं ना आर्बिट्ररी वैल्यूज है, इसमें कोई क्लैरिटी तो नहीं कि बाकी सेगमेंट सही है कि नहीं। I don't really understand your question in that sense. सर मैं कह रहा हूँ ये जो कलर्स जो रिप्रेजेंट हुए हैं ये Yes, उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये जो हैं पॉइंट्स बेसिकली, तो ये बार yes, बार चेंज होती आ रही हैं। सपोज करें yes, ब्राउन, जो हमारे लास्ट सेगमेंटेशन थी उसमें जो ब्राउन थी वो चेंज हुई थी आई थिंक पिंक जो पर्पल से, तो उसके हिसाब से तो फिर आपकी सेगमेंटेशन कभी भी फिक्स्ड या फिर डिफाइन नहीं होगी, तो ये तो बड़ा कितना कंफ्यूजिंग है। अच्छा देखिए, एक तो सबसे पहले एक बात तो ये है कि ये जो डिफरेंट कलर्स हैं ना, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है as such. So you could perhaps replace, you could exchange the brown and purple colors, and that's totally that doesn't make any difference, because जब आप एक दफा क्लस्टर कर लेते हैं उसके बाद आपने फिर जो है उसको लेबल करना होता है कि उस क्लस्टर के अंदर किस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं. That's one thing. And there is an issue with this algorithm जो अभी हम next slide में discuss करेंगे, and that is कि different starting points could lead to different clusters sometimes. वो एक issue कभी कभी आता है, but eventually you're going to have only a few possibilities. So यहाँ पे even though आपने जब start किया था you started completely random, लेकिन when you keep repeating this process ना, आप जब इन points को closest centroids पे assign करते रहते हैं, it's always going to become stable at the end. ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि it will keep moving, it's always going to stop at one particular point at the end, or stable हो जाएगा at the end. There is a problem that sometimes occurs, and that is based on कि आप जो initial assignment करते हैं ना, so let's look at this initial assignment कि ये आपकी सारी observations थी, right? These are all the observations that you had initially. इनको आपने randomly assign कर दिया in 3 different clusters, right? So this was the starting point. Now ये जो random assignment है ना at the start, different random assignments could sometimes lead to different final results. या जो आपके final results आते हैं ना, these could differ based on the initial assignment that you do. So in this slide we have clustering results based on 6 different assignments. ठीक है, आपने 6 different random initializations की, और उन पे आपको क्या हुआ, उन पे you get different results. So for example, you've got one result here, another result here, another result here. Now you see some of these clusters are very similar to each other. So for example, if you look at this second cluster, if you look at this third cluster, and this fourth and fifth clusters. So ये जो टॉप पे आप देखें, ये मिडिल में और टॉप राइट पे, और ये बॉटम लेफ्ट पे और बॉटम मिड में जो आपके 4 क्लस्टर्स हैं, दे आर फेयरली सिमिलर टू ईच अदर. इनफैक्ट दे आर प्रीटी मच द सेम विद वेरी माइनर डिफरेंसेस. इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ कि कलर्स कुछ में जो है वो डिफरेंट है, बट दैट डजंट मैटर. लेकिन जो ग्रुपिंग है दैट्स फेयरली सिमिलर. सो दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंट इनिशियलाइजेशंस. आपके पास एक ये पॉसिबिलिटी आ रही है. And then there's another clustering that you're getting. That's this first cluster at the top left and this cluster at the bottom right. These are fairly similar to each other. Not exactly the same, but they're fairly similar, especially in terms of this purple cluster that you have at the bottom. और ऊपर वाले थोड़े से जो हैं वो different है, right? So this is the problem कि आप जब different initialization करते हैं उन पे आपको different results मिलते हैं. ठीक है, this is a problem that you have in the k-means algorithm. So because जो आपके initial points होते हैं ना, उसकी base पर जो है आपको एक local optimum मिलता है, जिस पे वो जो है converge कर जाता है and doesn't move any further उसके बाद.
तो आपने ये देखा होगा when you studied maths and A levels or FSC, आपके global maximum global minimum का एक concept होता था, एक आपका local maximum local minimum का एक concept होता था. So that is what is working here, कि different initializations की वजह से आप उन local minimum points में आप फंस जाते हैं and you're not able to reach a global minimum. So in order to solve this problem, what you do is कि आप जो है ना बहुत सारी different initializations के साथ इस तरह ये run करते हैं. So maybe you could choose, let's say, 20 different random initializations. और फिर आप देख सकते हैं कि अच्छा उन 20 में से what are you getting in majority of those initializations. For example, in this case, आपको 6 में से 4 times आपको ये वाली clustering मिल रही है, right? So you would say कि अच्छा this is the best clustering, best 3 clustering that you could get out of this data. So this is how you can resolve this problem कि आप different initializations के साथ run करते हैं and then you choose whatever you're getting the most number of times. Right, Azhar, I hope it answers your question at least partially. Yes, sir. Okay, so then there are some practicalities of clustering. So one thing is कि आप number of clusters कैसे choose करें. So there are different factors that you consider in this. So for example, your domain knowledge, so different industries or different, let's say, company sizes, yeah, customer numbers could have a different optimal number of clusters. ठीक है, वो vary करेगा based on the industry that you're working on or या फिर based on your company size or your customer base. We also have practical constraints. For example, आप let's say अपने data को जो है 20 different जो है clusters में divide कर, आपने customer segmentation करनी है and what you do is you divide your customers into 20 different segments. Now, it might not be very practical if the company that you're working at is not very huge. So ideally the purpose of that customer segmentation would be कि आप हर cluster को, हर segment को जो है वो different तरह से target करें, right? आपने different segmentation की है कि ये 20 different types of customers. So ideally what you would want is कि आप 20 different types of customers को different तरह से market करें. Now it might not be possible if your budget is limited, right? If you're working at an average sized company, 20 different marketing campaigns could be a bit too much for you. Even if you're doing it on let's say digital media, even then to actually work on these 20 different campaigns might be a bit too much. So आपको practical constraints भी देखनी होती है कि अच्छा आप कितने different types of customers को जो है इस तरह से target कर सकते हैं, और based on that your number of clusters may change as well. You also have you'll also see some elbow charts like this. So how it works is कि आपके पास यहाँ पे y-axis के ऊपर you've got कि आपका distance जो है, आपके पास different observations हैं, उनके जो है centroids के साथ distance कितना ज़्यादा है. For example, आपके पास एक cluster के अंदर you've got let's say you've got 10 values. So you look at कि उन 10 values का आपके centroid के साथ average distance या total distance, sum of distance कितना है, and you plot it with number of clusters on the x-axis, right? So आपके जितने number of clusters increase करते जाएंगे, of course, आपके हर cluster के अंदर कम observations होंगी, और फिर उनकी जो sum of distance होगा from the centroid, that's also going to keep decreasing. और जितने आपके कम clusters होंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़्यादा variation होगी within one cluster, right? So you have to choose some optimal point within these two extremes, and that's generally called this elbow point, जहाँ पे आपका इस तरह से kink बन रहा है कि जिसके बाद से आपकी जो change in distance है, that's relatively less as compared to before. Now of course it's a subjective judgment at the end, लेकिन आप देखेंगे अच्छा वो कौन सा point है जहाँ पे आपके distances जो हैं, sum of distances जो है उसकी variation जो है पहले से it has reduced significantly. So in this case, this is sort of an elbow point जहाँ पे आपका ये gradient एकदम से जो है decrease हो गया, right? Magnitude of the gradient, at least that has
decreased here in a sense. So this could be the optimal point in that sense, because this could be the number of clusters that you might want to choose. But eventually, it is going to be very subjective at the end. You could be looking at all of these things at the same time and then coming up with some subjective judgment. Then another thing is कि आप ने जो clusters बनाए हैं, there should be in some way interpretable. So आप उनको जो है interpret जो है वो कर सकते हैं किसी तरह से, ठीक है? So in that case, this is very important to look at कि आपकी जो variation है within each cluster वो बहुत ज़्यादा भी ना हो. फिर अगर आपकी बहुत ज़्यादा variation है, आप उनको किसी तरह से it will be difficult for you to understand those clusters. और अगर आपकी variation कम है और वो features बहुत ज़्यादा जो हैं वो similar हैं एक दूसरे से within a cluster, it may be easier to understand that cluster and maybe label that cluster in some words कि ये यहाँ पे let's say अगर आप customer segmentation कर रहे हैं, so we discussed के आप उनको different तरह से जो है segment कर सकते हैं. For example, there could be a segment which is composed of, let's say, young people, or let's say customers that buy in large quantities, or customers who buy large valued, high valued products, or things like that, right? So you should be able to label the clusters in some way. So इसमें भी फिर आपका जो number of clusters वाला जो variable है, that also comes in handy here कि आपको clusters को इस तरह से रखना है कि आप उन सब को जो है किसी different तरह से उनको explain कर सकें इस cluster के अंदर इस तरह की observation. So you should be able to explain that in words somehow. And then cluster stability is also another thing जो हमने यहाँ पे देखा था कि 6 clusters, 6 different initializations were giving you different results. So that's also a concern कि आपके cluster जो है वो कितने stable हैं. So इसके लिए one thing is जो हमने अभी discuss की कि आप for example k-means clustering के case में आप क्या कर सकते हैं? You could start with different initializations और फिर उनको average कर सकते हैं. And another way to handle this is कि आप जो है एक दफा जो है आधा data जो है cluster कर लें, and then जो बाकी half data है, you assign that to what you've already to the centroids that you've already calculated based on the other half. आप बाकी half को सिर्फ assign कर दें based on the earlier clusters. और फिर आप देखें कि जो आपने पहले clusters बनाए थे using all data, वो कितने similar है to these clusters जो आपने बनाए हैं using half of the data. If they're very similar, your clusters are fairly stable. If they're very different, the stability is not there. So you may want to maybe rerun the algorithms using different values of k, maybe या फिर you may want to initialize using a different random assignment. Okay, so this is another concern. Finally, the different real-life applications you have of clustering. So customer segmentation is the most important thing that at least the business graduates here would come across later on. Very widely used in customer segmentation. Then you have feature learning. So remember, हमने एक problem discuss की थी initially when we were starting our machine learning part of the course, and that was called cursive dimensionality. कि आपके अगर number of variables बहुत ज़्यादा increase कर जाते हैं in machine learning algorithms, many of in machine learning problems, आपकी बहुत सारे जो models हैं, बहुत सारे algorithms हैं, they do not work very well when the number of variables is huge. Clustering comes in handy there as well. So what you do is कि let's say आपके पास एक data है, let's say you've got sales data, आपने sales predict करनी है, and you've got 400 different variables जिन पे जो है वो sales जो है वो depend कर सकती है, right? Now, if you were to just input all of those 400 variables into your model directly, the results might not be very good. Because आपके number of variables इतने ज़्यादा हैं, उसकी वजह से बहुत सारे algorithms की
जो है efficiency जो है वो affect होती है. So what you would do in that case is that you might choose some of the variables which are very important that you already know of. For example, like I'm sales predict karni hai, there's some variables that are always going to have an effect. For example, price, your advertisement, marketing that you're doing, and some other variables based on whatever industry that you're in. आपके कुछ factors होंगे जो you are sure कि इनका impact है direct sales के ऊपर, a significant impact. So let's say you choose, let's say 10 or 15 such variables जिनका definitely impact होना है sales के ऊपर. But then you've got the rest, let's say 380, 385 variables जिनका that all of them together, they do have some impact on sales, but individually maybe उनका impact जो है इतना ज़्यादा significant नहीं है. So one way you would do, you would use those variables is कि आप उन सारे जो है observation, सारी जो है variables को, सारे features को cluster कर लेते हैं in let's say 10 different groups. आप उन variables को 380 variables को क्या करते हैं, उनके आप 6 ग्रुप्स बना लेते हैं, 10 ग्रुप्स बना लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर इज द नंबर दैट यू नीड. अब वो 10 जब आप क्लस्टर्स बना लेंगे, ईच ऑफ दोस 10 क्लस्टर्स कंबाइंड वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी फ्रॉम दोज 380 वेरिएबल्स, उसमें से मेजॉरिटी जो इंफॉर्मेशन है वो सारे सिर्फ 10 क्लस्टर्स जो हैं वो एक तरह से कैप्चर कर लेंगे. So essentially what happens is कि आप उन 380 वेरिएबल्स या 385 वेरिएबल्स जो भी आपने ओमिट किए थे पहले, उनको यूज करके आपने 10 नए वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए यूजिंग क्लस्टरिंग. और आप इन 10 वेरिएबल्स को अगर आप इंक्लूड कर लें अपने मॉडल के अंदर, it's going to increase your performance as compared to कि अगर आप उनको सिर्फ जो है बाकी सबको इग्नोर ही कर देते. उससे ये बेहतर है कि आप उन सब की इंफॉर्मेशन को आपने क्लस्टरिंग को यूज करके इन 10 वेरिएबल्स के अंदर डाल दिए, और इन 10 वेरिएबल्स को आप इंक्लूड कर लेते हैं जब मॉडल के अंदर, इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस. राइट, इसको अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स that come under an umbrella called dimensionality reduction, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने number of dimensions को reduce करते हैं. And some of you referred to this earlier in the course. There's a technique called PCA, principal component what is the third what does the third letter represent? So it's called PCA, principal component analysis, I think. What that does is it uses a similar technique, and it reduces the total number of variables to a small number of variables जो आप अपने मॉडल के अंदर include कर सकते हैं. So that's another application. And then vector quantization. So for example, जो आपके कोई भी आपके पास images हैं, उन images में real life colors जो होते हैं, they are like in thousands or probably in a couple of millions, I think. उन सारे colors को आप जो है एक limited number of colors में किस तरह से आप जो है वो represent कर सकते हैं. For example, अगर आपने RGB use करना है, उसमें आप किस तरह से उन सारे colors को उस 128 colors में या 64 colors में आप represent कर सकते हैं. Clustering is also used there, कि आप देखते हैं कि which colors are closest to one of those 64 colors or 128 colors or 256 colors. ठीक है, तो वहाँ पे भी it has applications. Right, so that's where we end our clustering part. Now there's one small thing that I had left earlier, and I actually just quickly want to go back to that and quickly discuss that before we continue, before we start with the quiz. So I just want to show you very briefly another concept जो हमने पहले skip किया था. Yes.
Okay, so in the 10 minutes that we have left, let's quickly have a look at this. Can all of you see the screen now, which has cross validation here? Yes, sir. Yes. Okay. So remember, जब हमने start किया था machine learning, we talked about how we can divide our data into a training set, into a validation set, and a test set. There's another thing that is used very commonly in practice. In fact, आप देखेंगे in majority of the cases, instead of just dividing your data into a training set and a validation set, practically you actually use something that's called cross validation, right? Let's quickly have a look at it and see what this means. So remember the training set and validation set approach. So training set और validation set हम कब use करते थे? जब हम validation set हम इसलिए use करते थे to choose between different candidate models, right? So let's say आपके पास 10 different models हैं या एक model की 10 different variations हैं. आप कैसे choose करें कि कौन सा model जो है that is performing the best? So what you used to do was you used to divide your data into a training set into a validation set. आप train करते थे data को validation के ऊपर validate करते थे, whichever model performed the best, you would choose that model, right? But then there are actually some shortcomings here, and that is, the first is आप training data और validation data में जब split करते हैं, there's some sort of a trade-off here. अगर आप ट्रेनिंग डेटा को बहुत छोटा रख लेते हैं और वैलिडेशन डेटा को लार्ज रखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? क्योंकि आपका ट्रेनिंग डेटा बहुत कम है, द मॉडल्स दैट यू आर बिल्डिंग, जो आपके 10 कैंडिडेट मॉडल्स थे, जो आप वो 10 मॉडल्स बिल्ड कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द डेटा दैट यू आर यूजिंग फॉर दैट इज fairly small, so your models are going to be of fairly poor quality. If your validation data on the other hand is fairly small और आपके ट्रेनिंग डेटा अगर लार्ज भी है, तो आपके मॉडल्स तो काफी अच्छे बनेंगे, लेकिन जब आप उनको वैलिडेट कर रहे होंगे, जब उनको कंपेयर कर रहे होंगे उनके परफॉर्मेंस ऑन द वैलिडेशन सेट, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी रिलायबल, बिकॉज अगर आपके वैलिडेशन सेट बहुत छोटा है तो वहां पे जो आपकी वैलिडेशन के जो आपकी रिजल्ट्स होंगे, they are not going to be very stable. So different अगर आपके पास let's say सिर्फ 20 observations हैं या 200 observations हैं as compared to let's say a very large number of observations in the training set, तो जब आप उनको कंपेयर कर रहे होंगे डिफरेंट मॉडल्स को वैलिडेशन स्टेज के ऊपर, दिस कंपैरिजन इज गोइंग टू बी ऑफ पुअर क्वालिटी, राइट? बिकॉज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत स्मॉल होंगी, उसकी क्वालिटी जो है आपकी जो परफॉर्मेंस मेजर्स जो आप वहां पे यूज कर रहे होंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड. सो आइडियली यू वांट a large training set and a large validation set. Now these are two conflicting goals and they cannot happen at the same time. So the problem is, अगर आप ये सेट्स डिफरेंट स्प्लिट्स यूज करते हैं ऑफ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन सेट्स, आपको रिजल्ट्स जो है ना उसकी वजह से डिफरेंट मिलते हैं. अगर आप 80-20 स्प्लिट करते हैं, दैट गिव्स यू डिफरेंट रिजल्ट. आप 70-30 स्प्लिट करते हैं, दैट गिव्स यू डिफरेंट रिजल्ट. आप 60-40 स्प्लिट करते हैं, दैट मे गिव यू डिफरेंट रिजल्ट. सो यू नॉट रियली श्योर कि आप उनमें से कौन सा स्प्लिट यूज करें. Cross validation is an algorithm that actually takes care of these things. ठीक है? Now this is how it works. Let me actually skip this for now. Let me come back to this. आप जो है ना पहले इस visual को देख लें. आप essentially करते क्या हैं? You divide your data into different folds. ठीक है? आप इसको कहते हैं k-fold cross validation. So let's say you've got a data set that has, let's say, 70,000 observations, right? 70,000 observations हैं आपके पास आपके data के अंदर. And let's say you choose to use a 7-fold variation, k की वैल्यू आप 7 डाल देते हैं यहाँ पे. What that means is कि आप अपने डेटा को 7 parts में, 7 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं, right? You're dividing your data into 7 equal parts.
that would be known as a seven-fold cross validation, right? अब इसमें आप करते ये हैं कि आप एक दफा क्या करेंगे, सो फिर आपने सेवन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 70,000 ऑब्जर्वेशंस थी. नाउ ईच ऑफ दोस फोल्ड्स इज गोइंग टू हैव 10,000 ऑब्जर्वेशंस. सो first group is going to have 10,000 observations, second group is going to have another 10,000 observations, and so on. ठीक है. अब आप क्या करते हैं, you run your model, you train your model and validate it k number of times. अगर आपने 7-fold k की वैल्यू 7 आपने यहाँ पे डाली है, यानी आपने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 7 फोल्ड्स में डिवाइड किया है, आप उसको 7 टाइम्स ही रन करेंगे. एंड ईच टाइम व्हाट यू डू इज कि आप एक ग्रुप को, एक फोल्ड को आप वैलिडेशन सेट अज्यूम कर लेंगे और बाकी सब को, बाकी 6 पार्ट्स को आप जो है ट्रेनिंग डेटा अज्यूम कर लेंगे, राइट? सो ईच टाइम what you're doing is you're using 60,000 of the observations as training and the rest 10,000 as your validation data. ठीक है. So एक दफा आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले ग्रुप को वैलिडेशन चूज कर लेंगे, सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, सेकंड वाले ग्रुप को वैलिडेशन चूज करेंगे, एंड सो ऑन. अगर आप 7 फोल्ड यूज करें तो आप लास्ट 7th टाइम क्या करेंगे, 7th ग्रुप को वैलिडेशन डेटा एज्यूम कर लेंगे और बाकी 6 को एज ट्रेनिंग डेटा एज्यूम कर लेंगे, राइट? फॉर ईच ऑफ दीज 7 रन्स यू वुड कैलकुलेट व्हाटएवर परफॉर्मेंस मेजर दैट यू यूजिंग. आप एक्यूरेसी यूज कर रहे हैं अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप मीन स्क्वायर्ड एरर में भी यूज कर रहे हैं अगर आपकी ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, फॉर ईच ऑफ दीज रन्स आप उसका वो परफॉर्मेंस मेजर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, and then you're going to average that across these 7 runs. आप जो भी आपकी एवरेज आएगी ना यहाँ पे, that's going to be the performance of that particular model on this data. ठीक है. तो आप बजाय इसके कि आप एक फिक्स्ड ट्रेनिंग और फिक्स्ड वैलिडेशन रखें, practically in most of the cases what you do is आप एक क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं कि आप डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. यू टेक one group as validation and the rest of the groups as training, and then you keep changing which group you are using for validation. ठीक है. You repeat this for whatever is the number of groups that you have chosen. आप उतनी टाइम्स जो है इसको रन करते हैं, you average the performance, और फिर आपको जो भी आपकी एवरेज आती है that is your final result. Now let's go back to this. यहाँ पे जो आपका मॉडल एल्गोरिथम को इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है फॉर्मली. सो आप क्या करते हैं, k फोल्ड्स में डिवाइड करते हैं. सो मोस्ट कॉमनली आप देखेंगे आपकी 5 फोल्ड्स आप यूज करते हैं, यानी आप 5 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर देते हैं, और यू विल सी 10 फोल्ड्स. ये दोनों बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, 5 फोल्ड या 10 फोल्ड. 10 फोल्ड का मतलब आपने 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, राइट? फॉर ईच फोल्ड फ्रॉम 1 to k, सो लेट्स से यहाँ पे 5 है, अब 1 से लेकर 5 तक जो है ये रन करते हैं. मतलब आप इतनी टाइम्स जो है ये एल्गोरिथम रीरन करते हैं, राइट? सो फर्स्ट लूप में, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, आप ट्रेन करते हैं मॉडल को ऑन ऑल फोल्ड्स एक्सेप्ट वन ऑफ देम. ठीक है. और फिर जो आपने एक फोल्ड जो एक्सक्लूड किया होता है ट्रेनिंग वाले फेज से, आप उस पर वैलिडेट करते हैं, एंड देन यू गो बैक इनटू द लूप. आप i की वैल्यू 2 इनपुट कर देते हैं, आप सेकंड टाइम वो प्रोसेस रिपीट करते हैं. यू रिपीट इट 5 टाइम्स अगर आप 5 फोल्ड यूज करें, रिपीट इट 10 टाइम्स अगर आप 10 टाइम्स यूज करें, राइट? फॉर ईच ऑफ दोज मॉडल्स आप क्या करते हैं, एवरेज वैलिडेशन परफॉर्मेंस जो आपको आती है, अगर आपने लेट्स से आपके पास 10 डिफरेंट मॉडल्स थे जिनको आप कंपेयर कर रहे थे, you will get an average validation performance over all runs, और फिर आप वो वाला मॉडल चूज कर लेंगे that's giving you the best average validation performance. ठीक है. once you have chosen the best model, आप फिर क्या करेंगे, उस बेस्ट मॉडल को ट्रेन कर लेंगे on all the data. आप ट्रेनिंग और वैलिडेशन को कंबाइन कर लेंगे और उस पूरे के ऊपर ट्रेन कर लेंगे. आपको सिर्फ टेस्ट डेटा अलग होगा जो आपने पहले से सेपरेट किया होगा आप, लेकिन बाकी सबको you're going to run this on all this
training and validation set combined, and that's going to improve your performance. So essentially, it's as good as training your model on all of the data and also evaluating your model on all of the data. Pretty much, right? Evaluate आप सब पे कर रहे होंगे, train आप कर रहे होंगे k-1/k times most of the time. So for example, in this case, 6/7 6/7 into 100%, आप इतने percent data के ऊपर train कर रहे होंगे model in every step. ठीक है? So this is what cross validation is about. This is what you will see being used very commonly in practice, right? So we stop here and we move to the quiz now. Unless you have any questions. In fact, if the questions होंगे, I'm going to take them towards the end. Unless there's a very quick question. Aram, you have a question? Sir, ठीक है, quiz के बाद आपसे पूछ लूँ. Okay, good. So we stop here and we come back to this to take. I'll come back to this to take any questions towards the end. I've got all submissions. तो हम discuss कर सकते हैं, लेकिन उस discuss करने से पहले I want to go back to the slides there and ask अगर वहाँ पे आपके कोई questions है तो वो पहले discuss करेंगे, उसके बाद हम quiz पे आएंगे. So any questions on what we discussed today on k-means clustering or cross validation? उस पर कोई questions किसी के? Yes, Arham? सर वो जरा अगर आप स्लाइड्स खोल ले वो तो बेहतर हो जाएगा. मैंने उसी के अंदर से कौन सी वाली? सर यही जो आखिरी क्रॉस वैलिडेशन हमने पढ़ी है. ओके. जी सर शो अच्छा बल्कि हाँ जी हो गया. अच्छा सर, मैंने पूछना ये था कि इसके अंदर आपने कहा था ये बल्कि अगली स्लाइड जिसके अंदर हमने 7 दफ़ा रन किया है, तो मैंने इससे पूछना था कि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम इनको 60 डिफरेंट दफ़ा रन करें और हर बार हमारा वैलिडेशन डेटा फ़र्क होगा, मतलब हमारी 60,000 ऑब्जर्वेशन होगी इन ईच केस, तो फिर भी हर रन के अंदर तो हमारा वैलिडेशन डेटा बहुत कम नहीं है, तो एक्यूरेसी तो उसकी फिर भी बहुत कम आएगी. इवन इफ आप उसको 7 दफ़ा रन कर ले डिफरेंट डेटा के ऊपर, उसको कंपेयर करें ट्रेनिंग डेटा से, वो तो फिर भी बहुत कम है. अच्छा, देखिए इसमें दो चीजें. ट्रेनिंग डेटा क्या है? ट्रेनिंग डेटा पे क्या करते हैं? मॉडल को ट्रेन करते हैं. सो जितना ज्यादा आपका ट्रेनिंग डेटा होगा उतना अच्छा आपका मॉडल बनेगा. ठीक है, दैट्स वन थिंग. वैलिडेशन डेटा के ऊपर आप जो है अपने मॉडल को रन करके उसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं. ठीक है, तो अगर आप लेट्स से ये जो मैंने 7 ग्रुप्स बनाए हैं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ एक ग्रुप के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस चेक करूं, अब ऑब्वियसली 70,000 में से मैंने 10,000 रैंडम ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये टेस्ट किया है. ठीक है, अब इसकी एक सर्टेन जो है वैलिडिटी होगी, मतलब रिलायबिलिटी होगी कि ये कितना रिलायबल है, बिकॉज मैंने 70,000 में से 10,000 को के ऊपर मैंने अपने मॉडल को टेस्ट किया. ठीक है, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने 10,000 चूज किया सबसे पहले, अब मैं उसको निकाल के बाकी 60,000 में से कोई 10,000, दैट्स द सेकंड ग्रुप, उस पे भी मॉडल को टेस्ट करता हूँ. फिर मैं एक थर्ड ग्रुप पर जो है टेस्ट करता हूँ. फिर मैं एक फोर्थ ग्रुप पे टेस्ट करता हूँ. तो मैंने एसेंशियली 1 by 1 करके मैंने मतलब टर्न बाय टर्न मैंने सारे डेटा के ऊपर ही अपने मॉडल को एक सर्टेन मॉडल को वैलिडेट कर लिया. उसकी परफॉर्मेंस मैंने अपने पूरे डेटा के ऊपर ही जो है उसकी परफॉर्मेंस मेजर कर लिया. सो दैट्स व्हाट इट मींस के आप एक तरह से 100% डेटा के ऊपर अपने मॉडल को इवैल्यूएट करें, बिकॉज इवन दो इन वन रन आप एक छोटे से पार्ट के ऊपर करें, लेकिन क्योंकि आप इन सब रन्स की एवरेज लेते हैं, एसेंशियली आप सारी परफॉर्मेंसेस की एवरेज लेते हैं, तो आपने अपने पूरे डेटा के ऊपर ही अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लिया एक तरह से. Does that make sense, Arham? तो एट ईच रन आप अगर पहले के ऊपर 70,000 पे कर रहे हैं और उसके अंदर आप 10,000 के ऊपर अपना वैलिडेट कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो
हाँ जी सर। 70,000 टोटल डेटा है, उसको आप 7 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ठीक है। सर आप वो समझ आ गई है मुझे। मेरा ठीक क्वेश्चन ठीक ये है कि जो अगली रन के ऊपर आप इसको फिर से जब आप रन करेंगे तो फिर वो जो 10,000 ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी हमने जिस पे वैलिडेट कर दिए वो हम निकाल के करेंगे, क्योंकि नहीं, वो तो वो फिर देखिए ना, जनरेट नहीं हो जाएगी। ये ब्लू वाली जो है ना, ये आपकी ट्रेनिंग डेटा है। ब्लू इज योर ट्रेनिंग डेटा, द रेड इज योर वैलिडेशन डेटा। तो फर्स्ट टाइम आप क्या करते हैं, आप सेकंड से लेकर जो 7th तक ग्रुप्स है ना, इनके ऊपर आप ट्रेन करते हैं और फर्स्ट के ऊपर आप वैलिडेट करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम आप क्या करते हैं, 1 3 4 5 6 7 इन सब को आप एज ट्रेनिंग डेटा यूज करते हैं, इनके ऊपर दोबारा से वही मॉडल जो है ट्रेन करते हैं इसके ऊपर, और आप सेकंड के ऊपर आप वैलिडेट करते हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के ऊपर ट्रेन करते हैं और 7th के ऊपर वैलिडेट करते हैं। सो कंटामिनेशन नहीं हो रही, बिकॉज आप ट्रेनिंग जो है बाकी उसके अलावा बाकी सब डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, समझ आ गई। Okay. Any other questions on either k-means clustering or cross-validation? सर ये अलग से टेक्निक है या ये नेसेसरी स्टेप है? नेसेसरी तो नहीं कह सकते, लेकिन दिस इज what you will see most commonly used in almost every model, कि आप क्रॉस वैलिड इंस्टेड ऑफ, एक आपके पास हमने किया था ना कि आप अपने डेटा को डिवाइड कर लेते हैं इन 3 सेट्स, दैट्स ट्रेनिंग वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट्स, राइट। हमने इनिशियली ये किया था कि हम 3 सेट्स में डिवाइड कर लेंगे, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन करेंगे डिफरेंट मॉडल्स को, वैलिडेशन डेटा को यूज करके उनमें से बेस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर वो जो बेस्ट मॉडल आएगा उसको हम टेस्ट डेटा के ऊपर जो है वो टेस्ट कर लेंगे कि उसकी फ्यूचर में परफॉर्मेंस क्या होगी, राइट। अब उस स्टेप की बजाय इन प्रैक्टिस व्हाट यू विल सी मोस्ट कॉमनली इज कि आप 3 सेट्स की बजाय ना आप सिर्फ 2 सेट्स बनाएंगे। एक आपका ट्रेनिंग सेट होगा और उसी के अंदर वैलिडेशन सेट भी इंक्लूडेड होगा। तो आप एक सेट होगा जिसको हम कह सकते हैं ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट होगा जो टेस्ट सेट है, ठीक है। तो आपने सिर्फ 2 सेट्स बनाए इस तरह के, तो टेस्ट सेट तो ऑलरेडी सेपरेट रहेगा, उसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है ना एंड तक। जो दूसरा सेट है विच हैज बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन डेटा, उसके ऊपर आप ये क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इंस्टेड ऑफ डूइंग अ 60-20-20 स्प्लिट between training validation and test, what you could do here is आप सिर्फ 80-20 स्प्लिट किया आपने, 80 को आपने यूज कर लिया फॉर बोथ ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन, और जो बाकी 20 है उसको आपने टेस्ट सेट के लिए यूज कर लिया। इससे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी आपके मॉडल की, बिकॉज आप 80% को ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और आप 80% को ही यूज कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए यूजिंग क्रॉस वैलिडेशन। Does that make sense, Talha? सर एक क्वेश्चन और है, वो ये कि कोई ऐसा थंब रूल है जिससे हम डिसाइड कर सकें कि के कितने होने चाहिए और ये साइज कितना होना चाहिए इनके, इसका ये अच्छा नहीं, इसमें ना कोई इसमें सेट मेथड नहीं है। सो जनरली अगर आपका डेटा सेट बहुत, सो 2 कॉमनली आप देखेंगे being used in practice, one is 5-fold, as in k की वैल्यू 5 यूज होती है अक्सर, एक आपका 10 यूज होती है। इन दोनों में से जनरली वैल्यूज यूज होती है। सो इफ यू हैव अ लार्ज डेटा सेट you would use a 10-fold, बिकॉज उसमें फिर आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर फोल्ड के अंदर there is a significant number of observations। लेकिन डेटा नहीं है, you may want to use 5-fold। तो जनरली ये 2 कॉमन वैल्यूज यूज होती हैं, राइट। ओके सर। और सर इनमें से एक ही फोल्ड यूज हो रहा होता है वैलिडेशन के लिए, या 2-3 वैलिडेशन के लिए और 3-4 ट्रेनिंग के लिए? नहीं, for every run only one fold is going to, only one group is going to be used for validation and the rest are going to be used for training। तो आपको जब ब्लू आए तो सारे ट्रेनिंग के लिए यूज होंगे, सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए यूज होगा। तो अगर आप 10 कहते हैं तो 9 ट्रेनिंग में है और 1 वैलिडेशन के लिए है, ये अंडरस्टूड है? यस, लेकिन फिर वो 10 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होगा और हर दफा एक डिफरेंट ग्रुप जो है वो वैलिडेशन के लिए होगा, और फिर उन सब 10 रन्स की आप परफॉर्मेंस को एवरेज कर लेंगे।
ठीक है सर। right? Yes, any other issues? Any other problems? सर ये चैट में आया कोई पोस्ट प्रूनिंग फार्मूला। पोस्ट प्रूनिंग फार्मूला उस वो तो ट्रीज में था. व्हाट अबाउट दैट रायहा? उसमें कोई स्पेसिफिक इशू है? Okay, let's go back to that as well. But for now, Abhi, because most of the people are here, I'm going to stick to what we did today. उस पे कोई questions पहले और फिर quiz एक दफा discuss कर लें. उसके बाद we can come to the other issues that you might have from before. तो इसके ऊपर if there are no further issues, we'll quickly move on to the quiz और उसको discuss कर लेंगे. इसके ऊपर कोई फर्दर इश्यूज नहीं है क्रॉस वैलिडेशन और क्लस्टर एनालिसिस के ऊपर, तो वी कैन मूव ऑन. So let's go to the quiz. Okay, so let's look at this quiz. So you've got 3 people who scored full marks: Fatima, Awais, and Taha. Let's open one of them. Okay, so you've got 8 values of a target variable in the training set. इसकी आपको entropy find करनी है, right? What is the formula for entropy? Let me connect that actually. हो सकता है तो. अच्छा, so entropy के लिए you've got this formula. And okay, so entropy के लिए remember you've got a formula like this: negative, you have sigma, probability, log to the base 2 pi. So pi का क्या मतलब था? The fraction of classes you have, the fraction of a particular category you have in that variable. So यहाँ पे देखें zeros कितने हैं? Zeros are 3 out of 8. ठीक है, zeros are 3 out of 8. Ones कितने हैं? Ones are 5 over 8. ठीक है, आपके पास ये दो नंबर्स आ गए. So आपने essentially क्या करना है? Negative बाहर आ गया. You have the first fraction, that is 3 over 8 log of 3 over 8 plus 5 over 8 log to the base 2 of 5 over 8, right? बस आपने इसके अंदर ये values input करनी थी.
you see ये आप नेगेटिव बाहर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के साथ नेगेटिव आ जाएगा. That's this first option here. इसमें ये 5/8 वाली टर्म पहले लिखी हुई, यहाँ पे हमने बाद में लिख दिया, but that doesn't make any difference. This first one was the correct option. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये क्लियर है? By the way, as our class has ended long before, so if anybody is not interested in this, you're free to leave. It's not mandatory what we're doing here. Okay, so if this is clear, we can move on. Acha, second question में क्या था? Which of the following statements is true about k nearest neighbors? KNN performs much better if all of the data have the same scale. So that's what we discussed. KNN के अंदर the first step has to be scaling. Scaling के बगैर आपके जो ज़्यादा range वाले numbers होते हैं, ज़्यादा range वाले variables होते हैं, they tend to have more weight. तो आपको सबसे पहले scaling करनी होती है, right? So first is true. आपको scaling is important. KNN works well with a small number of input variables. Yes, that is true, but struggles when the number of inputs is large. So this is something that we discussed as well, the cursive dimensionality problem. कि आपको जब number of variables बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो KNN does not perform very well. So this is also correct. Yes, Azhar. सर ये जो सेकंड पार्ट है ना सेंटेंस का, बट स्ट्रगल्स व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट्स इज वेरी लार्ज, सर मैंने इसको ये समझा था कि शायद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, क्योंकि ऊपर पिछले पार्ट में आपने क्लियरली वेरिएबल्स स्पेसिफाई किया था, लेकिन अगले में नहीं. तो मैंने कहा पहले आपने कोई ट्रिक किया, इसलिए मैंने इसको 1 and 2 किया, 1 and 3 किया था, ना कि 2, क्योंकि 2 इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग. सर वो भी है ना, इट कैन वर्क विद लार्ज सेट्स ऑफ डेटा, तो फिर यहाँ पर वो भी कंफ्यूजन. एग्जैक्टली, सो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के साथ नहीं, और यहाँ वेरिएबल्स क्लैरिफाई नहीं हुआ. Okay, so you have this written here, the large number of input variables. जी सर, लेकिन अगले में नहीं. लेकिन अब जब एक दफा वो यूज हो गया है तो आई थिंक इट्स फेयरली क्लियर. उसके बाद सर एमसीक्यूज में बहुत कुछ जीरो हो जाता है, इसलिए इट्स एक्चुअली नॉट. लेकिन आपको उसी सेंटेंस के अंदर देखें, इट सेज इनपुट वेरिएबल, सो इट्स ऑब्वियस कि आप उसके बाद जो है उसी की बात कर रहे हैं. सर देखिए, आपने लिखा बट स्ट्रगल्स विद द नंबर ऑफ इनपुट्स इज वेरी लार्ज, ना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज वेरी लार्ज. तो नंबर ऑफ इनपुट्स बड़ा फर्क हो जाता है इसका मतलब. नो, बट एट द स्टार्ट व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट? इससे पहले नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स की ही बात हो रही है ना. कितने लोगों का इस तरह का इशू आया है? सर मेरा भी, मैंने भी 1 and 3 मार्क किया है. सर एक चीज पूछनी चाह रहा हूँ मैं. एक मिनट रुकिए, मुझे इसमें देखने दें कि अच्छा I'm not really sure because I think it's if I read the statement again and again, it's fairly clear from it. इसमें अगर तो यहाँ पे भी सिर्फ input लिखा होता ना पहले भी, तो then maybe I can understand, okay, you could misunderstand it. लेकिन जब उसी sentence के अंदर already लिखा हुआ है we're talking about input variables, so it's clear कि उसके बाद भी input का मतलब variables ही है. ये तो हम रिज्यूम करें ना, हम डिस्कशन कर रहे हैं, और आपने जो पहले बात किया मुझसे कंटिन्यूएशन है, लेकिन जब एक सेंटेंस लिखा हो तो उसमें तो जो एग्जैक्ट वर्ड होगी उससे हम देंगे ना. तो नंबर ऑफ इनपुट्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स. But in this sentence it is equal to input variables because उस sentence के अंदर जो input का मतलब दिया हुआ है वो variables ही है. साथ अच्छा चलें, what I'll do is I'll give half mark for this. ठीक है, जिन्होंने 1 and
3 किया हुआ है इसके अंदर, राइट? सो लेट मी नोट इट डाउन. This is अच्छा, quiz 4 में Okay, so whoever has done, whoever has chosen 1 and 3 in this question, they will get half a mark. Okay. Okay. Acha, can everyone please mention in addition to the recording link that you upload there, recording link that you submit there on Classroom, आप उसके साथ comment के अंदर ये भी please mention कर दे if you have chosen 1 and 3 in this particular question, ताकि I know when I'm checking कि यहाँ पे आपके marks जो increase करने हैं, ठीक है? Make sure when you submit the recording link, आप ये भी साथ उसके mention कर दें, ठीक है? So that I remember to check it. अच्छा, which of the following statements is correct about entropy? So entropy में remember, आप जितनी आपकी ज़्यादा pure होती है node, उतनी ज़्यादा entropy की value कम होती है, ठीक है? So basically 0 is the most pure node, and as you keep on increasing and you go up to 1 is the most impure node. तो pure का मतलब है कि आपकी सारी categories जो हैं वो आपकी सिर्फ एक ही category आ रही है उस node के ऊपर, और 1 का मतलब है all the categories are equally split, right? So 0 का मतलब होता है the node is most pure. So for example, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह से entropy के formula में so let's say I've got zeros and ones again. So zeros, let's say मेरे पास कोई भी नहीं है. So that's, let's say मेरे पास 8 values, ऊपर वाला का data लें, इसमें से 8 में से कोई भी 0 नहीं है, and I've got 8 out of 8 ones. ठीक है? उसके जब मैं entropy calculate करूँगा ना, it's going to be like this: negative of 1 over 1, yeah, 8 over 8. So let's say 8 over 8 log of 8 over 8 to the base 2 plus 0 over 8 into log of 0 over 8. ठीक है? Now those of you who remember logarithms, ये 8 over 8 क्या होता है? ये 1 होगा, तो log of 1 is 0. log of 1 is 0. यहाँ पे it's already 0 over 8 something, so that's also 0. So this is going to give you 0 as the result. तो जब ये pure node होती है जिसमें सिर्फ एक category होती है, your entropy is always going to be 0. So that's why it's part C here. ठीक है? Let's move on to the next part. सर इसके अंदर अगर आपने लिखा होता कि entropy value of 1 means that a data sample is equally split between all categories, तो वो भी सही होना था ना? Yes, वो भी सही होना था. Yes, that's correct. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं थी. अच्छा, now let's move on to the next part. Imagine you're working with Dawn News and you have to develop a machine learning algorithm which predicts the number of views on the articles on its website. ठीक है, आपको number of views predict करने हैं. Is this a regression problem or a classification problem? Number of views. Number of views predict करने हैं तो regression ही नहीं है सर. It's a regression problem, right? आपने categories नहीं कोई predict करनी है, आपने एक number predict करना है, right? एक numerical outcome है. So it's a regression problem. So your analysis is based on features like author name. So you have some features जिनकी base पर आप वो predict कर रहे हैं. Which of the following evaluation metrics would you choose in that case, right? So regression problem है. Regression problem के लिए you use mean squared error. या फिर इसके अलावा और भी ऑप्शन होती हैं, लेकिन इसके अंदर इन तीनों में से only mean squared error
is used for regression problems. Accuracy and F1 score, both of them are actually used for classification problems. So इसमें आपको सिर्फ only one choose करना था. Right? लेकिन सर एक्यूरेसी हम डिटरमिन नहीं करते हैं हर मॉडल में. Regression problem में accuracy would not really have any meaning. Accuracy का क्या मतलब होगा? उसमें percentage में तो कुछ नहीं आता ना आपके पास. कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं. Yeah, but इस तरह का regression problems में accuracy का क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं, मतलब यही हो सकता है कि कितना एक्यूरेट है मॉडल. Yeah, but how would you I don't know. really, how would you quantify that? उसको quantify करने का कोई तरीका नहीं होता ना accuracy percentage terms में, because accurate तो वो value होगी जो exact वो है जो आपकी actual value है, right? अब आपने sales predict करनी है और आपकी prediction कह रही है कि ये let's say 2000 units होनी चाहिए थी, आपकी ये prediction है, और actual sales जो होती हैं वो 2001 होती हैं. Now is your prediction accurate? Well, if you were to look at it in literal terms, तो वो accurate नहीं है, because आपने 2000 predict किया था और actual में क्या हुआ 2001 आया. तो इसके लिए आपको फिर use करना होता है some other measure जो आपके distances measure करती हैं from between the actual and prediction. तो वो mean squared error एक option होती है उसके अंदर, और भी options जो हमने सारी discuss की हैं, mean absolute error and so on, जो बाकी options भी होती हैं. Accuracy जो है it doesn't have a meaning in regression problems as such. सर तो टोटल करेक्ट प्रेडिक्शंस का कोई हिसाब नहीं होता. But again, correct prediction आप किसको कहेंगे? आप सिर्फ उसको आपके लेट्स से आप किसी की चीज की लाइक जो है अगर वो, आप कोई थ्रेशोल्ड रखा हुआ है आपने जिससे मीन स्क्वायर एरर का थ्रेशोल्ड है, ठीक है, तो इसके बाद आप उसे करेक्ट प्रेडिक्ट करते हो, उसके बाद रॉन्ग प्रेडिक्ट करते हो, तो आप नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शंस वगैरह करके ऐसे कर नहीं सकते. So that's a custom measure. That's a custom measure you can define. Yes, that's possible. But the problem with that is, आप let's say आप जो है threshold रख लेते हैं कि अच्छा 100 units का difference होगा ना तो मेरी prediction accurate है, right? But that's a very arbitrary number. So let's say आप 2000 units predict कर रहे थे, ठीक है? आपकी जो actual sales आई वो थी 2100. आपने सिर्फ क्योंकि 100 का थ्रेशोल्ड रखा हुआ था, यू वुड से कि अच्छा ये एक्यूरेट है. अच्छा, लेकिन अगर आपने 2000 ही प्रेडिक्ट किया और एक्चुअल जो है वो आ जाती 2101, उसको आप कहते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है. सो दैट्स वो ब्लैक एंड व्हाइट जो लाइन आप बना रहे हैं वो कहाँ पे बनाएंगे? दैट्स कंप्लीटली आर्बिट्रेरी एंड दैट माइट नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. Distances would make more sense because 2100 और 2101, इसमें से एक को आप accurate कह रहे हैं, एक को आप accurate नहीं कह रहे. Where how are you defining that cutoff? That's pretty arbitrary. तो इसलिए हम इस तरह की measure वहाँ पे use नहीं करते हैं. आप ज़्यादा ये देखते हैं कि आपके actual और prediction के दरम्यान में कितने ज़्यादा distances हैं. तो अगर ज़्यादा करीब values हैं, you would say it's more accurate. अगर ज़्यादा दूर values हैं, it's less accurate. तो उसके लिए आप इस तरह की measures use करते हैं, mean squared errors type या something like that. टर्म आप भी एक्यूरेट यूज कर रहे हैं कि मोर एक्यूरेट. लेकिन accurate, हाँ, लेकिन accuracy का मतलब एक accuracy जो है एक आई गेट इट. एक उसमें formal definition है उसकी. आप वो उस वाले की बात कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ी है पूरा वो. Yes, वो एक formal definition है, right? यहाँ पे accuracy को find करने के लिए एक तरह से ये आप accuracy से बेहतर word use करना है, performance किसकी बेहतर है, ठीक है? अब performance किसकी बेहतर है ये find करने के लिए you'll say you'll use mean squared errors or other measures like that. अच्छा, KNN algorithm does more computation during the validation and testing phase as compared to the training phase. तो अभी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रेनिंग फेज के अंदर आप सिर्फ डेटा को लोड करते हैं KNN के केस में. उनके सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, वो सारी कब होती हैं? जब आपने एक्चुअली कोई नए डेटा के ऊपर, कई नई ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्रेडिक्शन करनी होती है. बिकॉज सारे डिस्टेंसेस जो आप फाइंड करते हैं, दे आर बेस्ड ऑन दैट न्यू ऑब्जर्वेशन. आप न्यू ऑब्जर्वेशन के डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं विद ऑल द अदर ऑब्जर्वेशन. जब तक आपको न्यू डेटा पता ही नहीं होगा, आप वो कैलकुलेशन नहीं करते. सो ट्रेनिंग डेटा के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं होती एज सच, अदर देन maybe scaling your variables
उसके अलावा कोई ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं होती। सारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो वैलिडेशन फेज में या टेस्टिंग फेज में हो रही होती हैं, जब आप न्यू डेटा के ऊपर प्रेडिक्शंस कर रहे होते हो। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू that computation, that more computation is done in the validation and testing phase. Right? Any questions on this? Okay, so the last question was, so you have a company that has built this KNN classifier, and it gets 100% accuracy on training data. Okay, training data के ऊपर ये 100% accurate है. But when this model is deployed on the client side, आपने ये model actually deploy किया to use in practice, it turns out that it's not really performing very well. It's not accurate at all. Now, what could be the possible issues? So, आपके पास overfitting हो सकती है, underfitting हो सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते, या इनमें से कुछ कोई भी नहीं है. So, in this case, remember, आप अगर ट्रेनिंग डेटा पे 100% accurate predictions आपकी आ रही हैं और वो एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर रही हैं बाद में, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप ओवरफिटिंग कर रहे हैं ऑन योर ट्रेनिंग डेटा, बिकॉज आप ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो सारी वैल्यूज को आप सही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप उसमें कोई अगर नॉइज भी थी वो भी आप कैप्चर कर रहे हैं. जब आप नॉइज कैप्चर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स यू आर ओवरफिटिंग ऑन योर ट्रेनिंग डेटा. तो जब आप फ्यूचर में नए डेटा के ऊपर जब प्रिडिक्ट करेंगे, द परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड देयर, क्योंकि आपने वो सारी जो है वो नॉइज भी कैप्चर कर ली है इन द ट्रेनिंग फेज. तो वो उतना जो है जितना कॉम्प्लेक्स कर लिया आपने मॉडल, जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए था, तो वो फ्यूचर डेटा के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. राइट? एनी क्वेश्चंस ऑन द क्विज? सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है मुझे आखिरी वाले में, कि अगर हम कह रहे हैं कि 100% एक्यूरेसी है ऑन द ट्रेनिंग डेटा, तो मतलब इसके अंदर हमारे पास जो है, एक सेकंड, तो ये आपने आगे लिखा है कि इट हैज फाउंड दैट द मॉडल इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट, तो मतलब इसके अंदर हमारा बायस ज्यादा होगा ना? इसमें आपकी वेरिएंस ज्यादा होगी. लेकिन अगर आप कह रहे हैं मॉडल एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर हम ये नहीं कह रहे कि जो अपने एक्चुअल टारगेट से वो दूर है, तो मतलब अगर बायस ज्यादा है तो फिर तो अंडरफिटिंग होगी. अच्छा, इसमें ना बायस ज्यादा तब होता है जब आप जो है ट्रेनिंग फेज में सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर नहीं करते हैं. राइट? जब आपने ट्रेनिंग फेज में सारी इंफॉर्मेशन ही कैप्चर कर लिया कि आपका ट्रेनिंग डेटा के ऊपर वो जो है 100% एक्यूरेट हो गया, इवन आपने नॉइज भी कैप्चर कर लिया, इसका मतलब है कि आप जो है ओवरफिट कर रहे हैं. बायस का मतलब ये होता है कि ऑन एवरेज आपकी प्रेडिक्शन जो है वो एक्यूरेट नहीं है. ठीक है? उसका मतलब आप ने अगर 10 प्रेडिक्शंस किए हैं और उन 10 प्रेडिक्शंस जो है वो सारी जो हैं वो या तो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं एक तरह से, या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. दैट वुड बी अ बायस कि आप सारी प्रेडिक्शंस आपकी एक साइड पे टिल्ट कर रही हैं, या सारी ओवर एस्टिमेट हो रही. और दूसरी चीज जो है आपकी जब ओवर फिटिंग होती है तो आपकी वेरिएंस ज्यादा होती है. इसका मतलब ये होता है कि आप हो सकता है कि आप जब सारी अपनी प्रेडिक्शंस की एवरेज करें तो दे आर फेयरली एज एन ओके, लेकिन वो वेरिएंस इतनी ज्यादा है कि कोई वैल्यू आप बहुत ज्यादा ओवर प्रेडिक्ट करें, कोई वैल्यू आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपने ओवर फिटिंग की है, कि आपकी वेरिएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी. आपने मॉडल अपना इतना कॉम्प्लेक्स कर लिया है कि वो उसकी में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गई है. सो एक्यूरेसी दोनों तरह से आती है. एक्यूरेसी आपकी बायस में भी नहीं होती, और ओवरफिट आपकी वेरिएंस में भी नहीं होती. वेरिएंस ज्यादा तब भी आपकी कम एक्यूरेसी है, बायस ज्यादा तब भी कम एक्यूरेसी है. लेकिन वो एक्यूरेसी डिफरेंट होने की जो है वो रीजंस डिफरेंट हो सकती हैं. लेकिन अगर आपने मेंशन किया हो कि 100% एक्यूरेसी है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि k की वैल्यू बहुत स्मॉल है क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा है. यस, अगर KNN की बात करें तो k की वैल्यू बहुत स्मॉल है. यस,
that's ये what you would हर केस expect. के अंदर होगा कि अगर एक्यूरेसी 100% है मॉडल की तो मतलब k की वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरिएंस बहुत ज्यादा है. अगर k nearest neighbors की बात करें, yes, that's what it means. ठीक है सर, थैंक यू. Okay, if there are no other questions, we'll stop here for the quiz. I'll only be taking questions, a couple of questions जो मेरे से मैंने पूछे थे कुछ लोगों ने on some other topics. So can you please repeat that? अगर आपका अभी भी वो question है कोई तो. The format of the final exam, it's going to be practical. आपके पास एक आपने spreadsheet model बनाना होगा, एक आपका pivot tables, pivot charts के ऊपर कोई question होगा. You might have to do something on ggplot, and for machine learning, you might have some models run already और उनके results आपको हो सकता है show किए हों, उनको आपने interpret करना हो, या फिर आप से इसी तरह के कोई MCQs की बजाय there may be some short question answers जहाँ पे आपको कोई चीज जो है वो explain करनी हो in terms of the concepts that we have studied. अपने words के अंदर आपने 2-3 लाइंस में हो सकता है कुछ एक्सप्लेन करना. सो अगर आपका ये फिजिकल एग्जाम होता, you should have been able to do that in about 3 hours, 2.5 to 3 hours. लेकिन आपको ये अगर ये let's say ऑनलाइन एग्जाम होता है तो you might get like 3.5 hours or 4 hours. अगर टेक होम एग्जाम होता है तो यानी ऑफलाइन करना होता है अगर आपको, तो you might get about 6 hours. ओके, तो अभी तक ये मोड डिसाइड नहीं हुआ. ये अभी आपको यूनिवर्सिटी पॉलिसी, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से पता चलेगी, एकेडमिक से आपको ईमेल आएगी, वो अभी टेस्ट हो रही है. और सर ये सारा कंट्रोल यूनिवर्सिटी के पास आ चुका है. एचईसी की तरफ से जो रिकमेंडेशन होती है कि फाइनल एग्जाम पेपर पे होंगे, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें अब रिवोक हो गई हैं. एचईसी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, उनमें से फिर यूनिवर्सिटीज अपनी जो है अब यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको पूरे स्पेक्ट्रम में से उनको क्या चूज करना है. तो यूनिवर्सिटी को कुछ लिबर्टी है वहाँ पे आफ्टर सम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट एचईसी हैज पुट. उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जो है वो उसके अंदर रहते हुए यूनिवर्सिटी कोई भी कुछ भी डिसाइड कर सकती है बेसिकली. एचईसी की ये है कि आप असेसमेंट के बगैर जो है प्रमोट नहीं कर सकते. सो उनको कोई ना कोई किसी तरह का एग्जाम तो लेना है. अब वो क्या फॉर्मेट डिसाइड करते हैं वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है. Objective portion, that means MCQs या short answers, short questions तो होंगे जिसमें आपको 2-3 liner answers देने होंगे. MCQs भी हो सकते हैं if we are able to get the platform. अगर हमें platform नहीं मिलता तो I'm not sure about it. We might go on with the same method that we're using right now. हम हो सकता है we might take a short let's say 10 MCQ section with 10 questions in about 30 minutes or so. तो हो सकता है वो हो जाए, उसके अलावा आपका टेक होम एग्जाम हो जाए. But all of this is yet to be decided, and it depends on whatever the university decides. Hopefully in the next week at maximum हमें पता चल जाएगा कि exact format क्या होगा. बाकी सब चीजें exact जो है आपको कहाँ किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और ये R के formulas भी, ये सब चीजें now that classes are finished, I'll have some time. So I'll be uploading all of this stuff gradually as we go closer to the exam. सब चीजें मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको गाइड के किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो सब चीजें अपलोड हो जाएंगी यहाँ पे. ठीक है. For now, you can revise the slides, revise everything that we have covered in class. Spreadsheet modeling, pivot tables, pivot charts हमने assignments किए हैं, और जो मशीन लर्निंग पे जो हमने सारी स्लाइड्स हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं. ggplot पे हमने सारी जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस किए हैं वो रिवाइज कर सकते हैं. So this is what you can do for now. The exact format you'll get to know about that
closer to the exam. I'm not sure about the date of the exam. That's for university to decide. But what we're expecting right now is it's going to be after 29th of June. 29th of June वाले weekend में या week में या उससे बाद ही होगा. उससे पहले it's very unlikely. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था जी. सर, ये जिस तरह आपने आखिरी जो असाइनमेंट पोस्ट की है इसके ऊपर क्या नाम है, डेटा कैंप के ऊपर, तो उसके Yes. अंदर मतलब जिस तरह पिछली हमारी असाइनमेंट थी उसके अंदर कोई अजम्पशन नहीं वो ले रहे थे कि हमें ये चीज़ें पहले से आती है, तो इसके अंदर कोई चीज़ें थी ऐसी जिस तरह वो पहले से ही अज्यूम कर रहे थे कि ये हमने इवन दो कोई पुरानी हमने असाइनमेंट्स के अंदर नहीं कवर की हुई कोई चीज़ें, तो वो उसमें अजम्पशन ली हुई थी कि हमने ये की हुई है. तो मैं बस पूछना था कि हमारे फाइनल के अंदर इसी तरह का होगा या फिर मैं बस आर से थोड़ा सा मुझे है कंफ्यूजन कि आर से रिलेटेड आप किस तरह ये क्वेश्चन देंगे. फाइनल एग्जाम में आर के ऊपर आर से रिलेटेड सिर्फ वो चीज़ आएंगी जो हमने क्लास में एक्सप्लिसिटली कवर की हैं. डेटा कैंप पे कुछ भी आपने एडिशनल या इवन दीज लास्ट 3 एक्सरसाइजेस ये हमने क्लास में क्योंकि नहीं कवर की, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर फाइनल एग्जाम. ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है अभी वो भी आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग दैट एज वेल. जैसे आपकी असाइनमेंट की डेडलाइन खत्म होती है उसमें आपको इन चीज़ों को यूज करना होगा, कुछ चीज़ों को इनमें से जो आपने डेटा कैंप पे की हैं. लेकिन दैट्स ऑन योर ओन, आप ग्रुप में कर रहे होंगे, so maybe one of you is better in R or you can learn a lot on your own from Google as well. तो वो आपके पास टाइम होगा उसके लिए एक्सप्लोर करने के लिए और खुद से लर्न करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं. फाइनल एग्जाम में इट्स नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड जो भी हमने क्लास में नहीं कवर किया. सर डेडलाइन अगर आप काइंडली एग्जाम के बाद रख दे सबमिशन की, एग्जाम के बाद ही project होगी, एग्जाम के बाद ही होगी, एग्जाम के बाद. ठीक है सर, थैंक यू. अभी प्रेजेंटेशंस भी नहीं होनी है इस दफ़ा, तो पहले तो मेरा स्टार्ट में प्लान था कि प्रेजेंटेशंस भी होंगी इसकी, लेकिन प्रेजेंटेशंस अब ख़त्म हो गई हैं तो आपको सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. सो you'll have enough time for that. It should not be a problem. सर रिपोर्ट वो प्रोजेक्ट की होगी? प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, यस. ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स? सर ये प्रोजेक्ट के वो मेंबर्स वही रहेंगे जिनके साथ असाइनमेंट की थी या फिर जो आपने मतलब आपने कहा था कि असाइनमेंट में तो आपके असाइनमेंट में तो 2 मेंबर ग्रुप्स थे, इसमें यू गोइंग टू हैव एटलीस्ट 3 मेंबर ग्रुप्स, सो 3 या 4 मेंबर ग्रुप्स. तो these are going to be different. तो आप लोग खुद से सजेस्ट कर सकते हैं, that's fine, because अब सिचुएशन ऐसी है कि we would want to give more liberty. तो आप जिस तरह भी जो आपको सूट करता है, you can choose that. If somebody cannot find a group, तो उसमें फिर जो है मैं खुद से असाइन कर दूंगा. But you can choose yourself if you want. Avais, yes. Okay. Okay. These are the last 5 minutes. I need to leave. So, quick question है जल्दी से फिर आप कर लें. जी अवैस. मैंने आपसे पूछना था कि एग्जाम ऑनलाइन होगा तो इसमें जो लाइट वाला इशू है या इस तरह की, तो उसको कैसे कवर किया जाएगा? ये भी अब यूनिवर्सिटी ही अनाउंस करेगी. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो किस तरह से हैंडल होगा. The administration is deliberating over this, तो maybe in the next week or so आपको इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी. सर अगर हमें कुछ पूछना हो प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि काफी ज्यादा अवैस मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. सर थोड़े से क्वेश्चन है मशीन लर्निंग पे, तो इसके लिए सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल. सर आवाज़ आ रही है? बहुत कम आ रही है. सर इंटरनेट का इशू होगा. अब आवाज़ आ रही है आपको? जी अब बताएं, आप ऊंचा बोलें थोड़ा. सर बात यह है कि मैंने ना कुछ लेक्चर्स पे क्वेश्चन थे तो मुझे उनके आंसर चाहिए थे, तो इसके लिए अगर सर अबूबकर अगर कुछ सेशन वगैरह ऑनलाइन रखते हैं तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जी वो भी रख लेंगे, और मैं भी शायद थर्सडे को एक ऑप्शन सेशन कर लूँ तब भी आप पूछ सकते हैं. और अबूबकर को भी मैं कह दूंगा आप लोगों को कोई उन्होंने ऑफिस आवर्स पहले बताएं जब आप ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन में बैठे होंगे,
या नहीं? अच्छा ठीक है, तो अभी से हम in the next for the next couple of weeks he will be available every week for a couple of days एक set time के ऊपर, तो आप उनमें कोई भी क्वेश्चन जो आपके वो पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, any other questions? सर एक और क्वेश्चन था। आज वो एक तो मेरा वो मसला है कि घर में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये फैमिली के दरमियान मैंने बैठ के वो क्विज दिया, तो जिसकी वजह से ना वो काफ़ी शोर था, तो मुझे ना वो सही तरह से एक तो फोकस नहीं हो पा रहा था, और दूसरी बात यह है कि बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था, जिसकी वजह से मैं ना वो रिकॉर्डिंग में वो आ रहा होगा शायद, मैं बार बार फ़ोन को बंद कर रहा हूँ। तो फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए था ना उस टाइम पे, या उसको साइलेंट होना चाहिए था? फ़ोन मेरे पास सर, मैंने साइलेंट ही रखा हुआ है, लेकिन वो पास पड़ा हुआ है मेरे पास, बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि वो आपने कहा था कि उसको कैमरे में, अदरवाइज वो। अच्छा ठीक है, फिर तो सर वो मैं बस उसको क्लोज कर रहा था, तो मुझे ये डर है कि वो आप उसको ये ना समझें मैंने मोबाइल पे देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप बस वो ध्यान रखें, नेक्स्ट टाइम से उसको साइलेंट पे रखें, ताकि आपको दरमियान में दोबारा बार बार जो है इसका यूज ना करना पड़े, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, so if there are no other questions, I think we can stop here. दरमियान में एक किसने क्वेश्चन पूछा था, I am forgetting that somewhere, किसने का पूछा था ऊपर पोस्ट प्रूनिंग पे? रेहा, do you still have the question? I would recommend कि आप एक दफा उसकी जो है वीडियो देख लें. If you're still confused, we can discuss this on Thursday को I might have an optional class for those of you who want to attend, तो तब हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? रेहा, नहीं बताऊं। okay, so we stop here and we will hopefully have another session on Thursday. Allah Hafiz.